add on करें, final verdict is not. Yeah, I just want to add something over here for the youngsters who are sitting here. There is a new concept, a new term I would say, which is called shared decision making. Okay. So the thing is that when you are doing an informed consent or you are counseling a patient or the family or the gynecologist for that matter, and then the statist, so this is all a shared decision making. Okay. So whatever you decide, it has to be shared with all of us. With all of us. Yes sir, please sir, कुछ add on करें. मेरे ख्याल में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आजकल चल रही है, हम बात करना नहीं चाहते। हमारे ट्रेनिंग्स भी हम पेशेंट के साथ बात नहीं करते। हमने एक रूटीन के अंदर एक कागज़ पड़ा हुआ सामने, उसको टीबीसी की असेसमेंट है, टक 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 किया, हम उसको काउंसल नहीं करते। मैं अपने ट्रेनिंग्स को भी इसी में यही कहता हूँ कि बात तो करो, मरीज के साथ बात तो करो, एटलीस्ट उनको कंफर्टेबल करो, उनको पता हो कि ये डॉक्टर जो है ये मेरे फायदे के लिए भी चीज़ कर रहा है। बिल्कुल। ये मिसिंग है हमारे। टाइम हमें पेशेंट को देना चाहिए। मुझे पता है आपके पास टाइम कम है, मैंने एक बात और नहीं मैडम। There is a term kindness. Yes. We are not kind to our patient. We have to remember at all times that we have to respect the patient. Exactly. And we have to be kind when we are talking to the patient. Then consensuses are easy to achieve. हम बहुत ज़्यादा साइंटिफिक हो जाते हैं, हम पेशेंट की फीलिंग्स उसको एम्पैथाइज करने का वर्ड तो हम बहुत यूज करते हैं, but if you ask yourself the question, are you guys really empathetic towards the patient? Most of the time the answer is no. Exactly. So जो पेशेंट का फियर होता है वो जेन्युइन होता है। तो जिस तरह से कहते थे कि जब पेशेंट कुछ कहता है, रिश्तेदार कुछ कहते हैं, तो you have to perceive and understand the fears of the patient, be kind to her, then take her through a process of this. Exactly. One thing which I will add over here is whenever I was called in the healthcare commission, the one problem which always was concern of the attendants or patient that we were not properly informed. कि हमसे किसी ने बात नहीं की, हमें अंडर हुआ, उसके बाद हम ये बताया सबको ठीक है चले गए और बाद में कोई फेस दी प्रॉब्लम, हमें कुछ बताया नहीं गया। एक जूनियर डॉक्टर आया और उसने बिल्कुल गाइड किया, दैट वाज नॉट अप टू मार्क। ये बात, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द प्रॉपर कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट आई सजेस्ट। So to summarize, communication, kindness and empathy. Madam Rabina are saying time to change the practice. Patient need our time, our empathy and kindness. Only then we can save ourselves from these overriding issues of medical legal litigation. Sadia, can it's me here, Dr. On this issue of informed consent and joint decision making, where are the doctors or the professionals' rights, as we have talked about, and the patient's rights? Do we talk about, or does the hospital or any hospital under the cover of the Healthcare Commission, do they talk about the doctor's rights and what are the legal aspects of the safety of the doctor? Can we have a word about that? So very important question from Sir. It's a very important question raised by you. Whenever I have been called, if we have retrospective other and the safety of the doctor, what the Healthcare Commission suggests that if you have any problem, you should report to the Health Commission as the patient is reporting to the Commission. But sometimes it's practically not possible because at that time we are on the back foot where there is any problem. But the Commission's guidelines are that you can pursue and you can lodge a complaint against the patient or attendant if they have physical violence or something like that. Dr. Hill, you have raised a very important point, and if we start discussing that point, probably this panel discussion will have to be paused for a very, very long time. Because doctor safety is an area of serious concern for all of us. And for hospitals to ensure the safety of the doctors, there have to be protocols in place which the hospital administration, which the doctors have to ensure, and then there is a whole system by which you work to protect the doctors. So those systems are recommended to be put in place for the safety of the doctors. They include information of the doctors, a system of emergency alarm raising if there is any situation, people to take care of that situation, having a lawyer to defend the doctors, and so on and so forth. So it is a very important issue that we have raised, and I think we need to have another session on safety of doctors. Thank you, madam. Sir, Army Federals.
entirely different from private setups. We have very little knowledge about them. Sir, आप आज हमारे साथ हैं, बड़ा अच्छा मौका है, थोड़ा सा हमें बताएं कि how the medical legal issues in army setups are being dealt और किस तरह से वहाँ proceed किया जाता है और वहाँ पे क्या scenarios होते हैं. आर्मी का एक सेटअप का ये इशू है कि लिटिगेशन बहुत सीरियस है और हमें इसीलिए हर चीज़ की एसओपीज बनी हुई है, स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोसीजर्स वो बने हुए हैं, उनके अकॉर्डिंगली हमें चलना है और ये अच्छी चीज़ भी है कि एसओपीज बनी हुई है, उनके हिसाब से चलने तो प्रॉब्लम्स कम आती हैं वैसे, लेकिन अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो They are serious, very serious. काउंसलिंग रूम हर ओटी के अंदर हमारी एक काउंसलिंग रूम बना हुआ है. Okay. प्री सीवियर असेसमेंट के वक्त हम काउंसलिंग करते हैं पेशेंट्स की और उनको समझाते हैं हर चीज़. ये इश्यूज जो आ रहे हैं कि मैंने खाना नहीं लगाना, मैंने जीए लेना है, ये इश्यूज भी डिस्कस होते हैं और हमने इसलिए एक काउंसलिंग रूम जो बनाया हुआ है उसमें आईसीयू और ओटी की काउंसलिंग रूम एक ही है और उसके अंदर हम काउंसलिंग जब करते हैं तो फैमिली को उठा के उससे बात करते हैं और यूजुअली पेशेंट्स आर सोल्जर्स, तो सोल्जर की इजीली समझ आती है. एक और चीज जो आई थिंक एक जो इम्पोर्टेंट चीज है कि इन पब्लिक सेक्टर वी हैव फ्री एक्सेस बाय द अटेंडेंट्स एंड अदर colleagues to the patient. In army maybe there may be some restriction to the approach to the patient. So that is one reason when the attendants, patient, journalist and your politician, everybody is approaching to the patient and interfering in your treatment, your colleagues, then there are Everyone is questioning you. Exactly. So I think army setups rules and regulations better तरीके से follow करेंगे from your side. जी आर्मी के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े से बेहतर है. एसओपीज रिटन है, हर प्रोसीजर की एसओपीज रिटन है, इसलिए हमें आसानी है. That's good. फिर एक इन्फॉर्म कंसेंट की भी बात हो गई. एक प्रोसीजर है, उसका रिस्क एक्सप्लेन कर दिया पेशेंट को कि जी ये हो सकता है एंड सिंस कॉम्प्लिकेशन अकर, फिर पेशेंट के पास राइट है शुरू करने का कि जी आप एक आपने एक्सप्लेन किया कि ये प्रोसीजर कॉम्प्लिकेशन हो सकती है और अनफॉर्चुनेटली उस पेशेंट में हो गई, लाइक में नर्व इंजरी हो गई, कोई एयरवे ट्रॉमा हो गया और उसके बाद आपको शुरू कर रहा है. तो ये इसके अंदर हम सेव कर सकते हैं खुद को कि जी आपने बताया था और प्रोसीजरल रिस्क है अपनी जगह. जी प्रोसीजर के जो छोटे मोटे जैसे आप एयर में डैमेज और इस तरह की चीज़ें करते हैं वो तो एक रूटीन के अंदर होती हैं. Sometimes patient is very ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स हैं सारे. Exactly, training हमारे इंस्टीट्यूट है. ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में डेफिनेटली ये चीज़ें होती हैं छोटी मोटी. और लेकिन ये कि मैं वही कह रहा हूँ ना कि जो हमारा प्री एंड सीवियर असेसमेंट है उसमें हम सब चीज़ें कंप्लीट जो है काउंसलिंग और काउंसलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है. बल्कि ये ऐसा फोरम है जिसके अंदर हम कि मैं चाहूँगा कि हम एक नेशनली इस तरह का एक प्री एंड सीवियर फॉर्म सर ज़्यादा बैठे हैं, तो प्री एंड सीवियर फॉर्म और कोई काउंसलिंग ऐसा फॉर्म बनाएं जो नेशनली हो, पूरे पाकिस्तान में हो, हर हॉस्पिटल सेम हो, ताकि एवरीबॉडी नोस कि भाई ये रिस्क तो सीक्रेट है ही है. और वो बहुत हैविंग. जी Very मैडम. important one thing which I will like to add over here. We have a pre-anesthesia assessment form which is universally accepted by the commission and everybody. But the problem is, in spite of your counseling with your high risk consent, whenever there is problem, you will have to. You will have to do it. May I interject? Yes, sir. With your permission. Yeah, you raised a very important point because you said that if once we have counseled the patient कि ये risk हो सकता है और उसके बाद हो जाता है तो फिर वो हमें क्यों? Counseling says that you have to inform them about the possibility of a complication occurring and what is that possibility ताकि वो rational decision making कर सके. That does not absolve you of the responsibility to provide high quality care. If the patient or their family at any point feel that that care has not been provided, then they are well within their right to go to any forum, whichever the legal forum is, to lodge a complaint. And it becomes our responsibility to prove that we provided that standard of care and complication occurred despite our having provided that standard of care. So ये दो चीजों को please हम लोग आपस में हम confuse ना करें. ठीक है. Thank you so much, sir. Thank you. Just add a little